हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हो तो हाय, आई एम सुष्मिता एंड आई मेक फैशन एंड DIY वीडियोस। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज यू गाइस रिक्वेस्टेड दिस सो मच। मैंने पहले इयररिंग्स और हैंड हार्नेस बनाया था यूवी रेजिन से एंड यू ऑल लव्ड इट। सो टुडे फाइनली आई मेड दिस ब्यूटीफुल फ्लोरल नेक सेट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम अपने पेटल्स बनाएंगे एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। मैंने यहाँ 0.4 mm कॉपर गोल्डन वायर लिया है। इसको मैंने एक मार्कर के अराउंड रैप किया टू गेट इक्वल साइज लूप्स। हर लूप को ट्विस्ट करके सिक्योर कर दिया। मेक श्योर सब पेटल का साइज़ ऑलमोस्ट सेम हो, तभी फ्लावर नीट लगेगा। तो इस तरीके से मैंने सारे अपने पेटल्स रेडी कर लिए। मैंने इन वायर पेटल्स को थोड़ा शेप एडजस्ट किया फ्लावर लुक देने के लिए। So now comes the second step, which is resin dipping. So this time I'm using this yellow pigment. Take just a drop of pigment in UV resin and mix it well. Now comes the most satisfying yet time-taking part, and honestly this step needs a lot of patience because हर पेटल को इंडिविजुअली रेजिन में डिप करना होता है और एक ही डिप में परफेक्ट कोटिंग नहीं आती। सो व्हाट आई डिड, मैंने यूवी रेजिन लिया और एक एक पेटल को केयरफुली रेजिन में डिप किया। पेटल को स्लोली डिप करो और एक्स्ट्रा रेजिन नहीं रह जाए, इसीलिए साइड के कॉर्नर से जो एक्स्ट्रा रेजिन है उसको रिमूव कर दो। अगर ज़्यादा रेजिन रह गया तो लेयर अनइवन हो सकती है। मैंने इसे यूवी लाइट के नीचे क्योर किया फॉर 2 to 3 मिनट्स। और इस तरीके से मैंने मेरे स्मॉल एंड बिग पेटल्स दोनों रेडी कर लिए। Now comes the part where everything starts looking like an actual flower.
सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जॉइनिंग पेटल्स आई फर्स्ट क्रिएटेड द सेंटर डिटेलिंग। मैंने एक थिन वायर लिया, उसमें मैंने पर्ल्स और क्रिस्टल बीड्स ट्विस्ट करके अटैच किए। दिस बिकम्स द सेंटर ऑफ आवर फ्लावर एंड गिव्स इट दैट प्रीमियम लुक। मैंने इस सेंटर पीस के अराउंड 5 पेटल्स अटैच किए वन बाय वन। हर पेटल को नीटली एडजस्ट करके वायर से सिक्योर कर लिया। मेक श्योर पेटल्स इवनली प्लेस्ड हो सो फ्लावर बैलेंस्ड लगे, एंड जस्ट लाइक दैट अ ब्यूटिफुल हैंडमेड फ्लावर इज़ रेडी। इसी प्रोसेस को रिपीट करके मैंने मल्टीपल फ्लावर्स बना लिए फॉर द नेकलेस। अब हम फाइनल नेकलेस असेंबल करेंगे। एक बेस वायर लिया और उसे नेक शेप दिया। फिर मैं सारे फ्लावर्स को इसके ऊपर अटैच करूँगी। मैंने कुछ पर्ल्स और क्रिस्टल ऐड किए फॉर दैट प्रीमियम लुक। वायर रैपिंग को क्लीन रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर।